Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. A very good evening to all the eminent doctors. Thank you so much for joining us for today's webinar. Our endeavor is to spread awareness about rabies, which is fatal but can be avoided once appropriately vaccinated. This is an initiative from Cadila through its innovation to serve the society and humankind. The topic of the webinar is novel 3-dose G protein vaccines, ultimate key for compliance. Dear doctor, rabies is the world first novel 3-dose anti-rabies vaccine, and with great pride, we would like to inform you that rabies has successfully completed 1 year of launch with more than 40,000 animal bite victims being vaccinated. 100% compliance was recorded and no case of ADRs was registered. With this is my honor to introduce you to the speaker of today's webinar, Dr. Ajay Govardhan sir, physician at practicing at Durg headquarters and having more than 35 years of experience. Dr. Ajay Govardhan sir also having president of past president of Chhattisgarh IMA chapter, and right now he is the in body of national body member. Sir, for now, I would like to request Dr. Jagvardhan sir to initiate the talk, and later on we will have a question answer session. All the participants can drop their question in the drop box, and we will read out all the question after the presentation. Hand over to Dr. Ajay Govardhan sir. Yes. Can I start? Yes, sir. Yes, sir. Rabies is a public challenge in India. Globally, 39,000 human deaths annually. Highest in India. India had 20,000 human deaths. Annually from rabies, according to 60% of the rabies death in Asia and 35% of globally. 91% deaths in India occurred in rural areas particularly. In India, every minute a
rabies patient dies. Current management, local wound treatment, first aid, that is the rinsing of the wound in a proper way with soap and water. Later, the active immunization by vaccine. And the third one is passive immunization with rabies immunoglobulin. This is 3 doses in comparison to the 5 doses schedule as the previous ones. Current challenges in PEP. Non-compliance, current rabies vaccine are cell-cultured vaccine. Inactivated vaccines are more than 50 years old technology, consistent with in potency, stability, availability, short supply, and adverse reactions. Compliance anti-rabies vaccine. Compliant. WHO received full course of ARV. Who received the full course of ARV, that is the scheduled dose of ARV on the recommended dates. Delayed compliant. Who completed the schedule of doses ARVs within 60 days but deviated from the scheduled regime. Dropout and non-compliant. Who had taken at least one dose vaccine of ARV after animal bite but not completed all the scheduled dates. Limitations to WHO recommendations. Rabies post-exposure prophylaxis in routine practice in view of new centers for disease control and prevention of WHO Health Organization recommendation. A restorative analysis done in tribal clinic. The total of 110 patients who received rabies 4 doses PEP. Shortcomings in the management of these patients were late limitations of rabies PEP in travelers, administration of human rabies immunoglobulin RHIG, antibody levels 0.5 per IU/ml in 6 of 90 patients after 4 doses of vaccine. The conclusion is patients do not always receive optimal rabies PEP under real life conditions. A significant population of patients did not develop adequate antibody levels after 4 doses of vaccine. The non-compliance to 5 doses proven cause of death. The reason of death may be due to lack of administration of rabies immunoglobulin or poor compliance to vaccine. Compliance to post-exposure prophylaxis among animal bite patients, a hospital-based epidemiological study in Safdarjung Hospital, New Delhi, and 360 animal bites patient, a pre-diagnosed, pre-designed, post-protested, structured questionnaires were administered by the interview technique. 53% were non-compliant to the full course of ARV. Brief research article, compliance to anti-rabies vaccine in post-exposure prophylaxis. At Municipal Corporation Hospitals, Bangalore, and 215 animal bite patients, 1 dose of rabies vaccine administered intramuscularly on dates 037-14-28 as PEP, also measures constraints of compliance to complete course. The compliance rate for intramuscular rabies vaccine was 60%. Constraints for compliance to complete course of anti-rabies.
The major constraints for compliance to complete ARV was loss of wages, 47%. Evolution of rabies vaccination. Nervous tissue, which is grown in nervous tissue, live attenuated vaccine, non-standardized right preparation. The another one was inactivated vaccine in brain up to 10%, minimal neural content, liquid preparation, cell culture, inactivated vaccine, cell culture, standardized immunogenicity lipolyzed. That is, injections were up to 31 injections in the first one. Second one required 14 injections, each 0.5 ml daily. And the third one, 5 injections, 0.5 ml. They are the 5 months. Non-compliance lead to evolution in treatment regime from 31 doses to 5 doses and still on. Meeting the unmet medical need, introducing a novel vaccine with simple and shorter regime. 3 novel dose recombinant rabies G protein vaccine. Novel 3 doses recombinant rabies G protein vaccine. Novel 3 doses recombinant rabies G vaccine, first protein subunit vaccine, prepared for LMP platform, first vaccine with 3 doses intramuscular. Better compliance due to easy and flow regime and less visits. Convenience, ready to use, no reconstitutional need. Novel 3-dose recombinant rabies G protein vaccine. VLP technology. Native virus. VLP as vaccine. Clinical phase 2 study design. Rabipur seroprotection data. Clinical study phase 3. Safety and immunogenicity of a novel 3-dose recombinant non-optical rabies G protein vaccine administered as stimulated post-exposure immunization, a randomized comparator controlled multinuclear phase 3 clinical study, human vaccine and immunotherapeutics. Phase 3 study to evaluate immunogenicity and safety of rabies G vaccine, protein vaccine administered as a stimulated post-exposure immunity in health volunteers, randomized comparative controlled multicentric study, total subjects 800. Results, efficacy. The results were consistent with cross different age groups in genders. Observed difference 1.52. Non-inferiority for seroprotection primary and end point day 14 and 42 were met. Test and comparator are identical in seroprotection rate both on days 14 and 42. Safety. Novel 3 doses have better safety profile as significantly less AES compared to reference vaccine. Study conclusion. Novel 3 doses
was non-inferior to reference vaccine. Less adverse effects compared to reference vaccine. Novel 3 vaccine was found to be safe, immunogenic and was comparable to 5 doses of WHO pre-qualified vaccine. Awards. Pharma Innovation of the Year by the Economic Times. The Golden Globe Tigers Award, Malaysia for Innovative Product of the Year. Thank you. Thank you very much. Innovation of world's first novel 3 doses anti-rabies vaccine by Cadila Pharmaceuticals. Thanks. थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सभी डॉक्टर से तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो चैट बॉक्स पे पुट अप कर सकते हैं। मैं आपका क्वेश्चन आंसर सर को ये कर सकता हूँ, और जो भी डाउट्स है या फिर जो भी क्लियरिटी आपको चाहिए वो डॉक्टर गोवर्धन सर आपको बताएंगे। सर एक मैसेज आया है कि 3 डोज 5 डोज की एफिकेसी में दोनों में उसका फर्क क्या है? पहले 5 डोज जो वैक्सीन थी और ये 3 डोज है, तो उतना ही एफिकेसी है? हाँ, उतनी एफिकेसी। यस सर। एंड सर डॉक्टर भानु साहू सर पूछ रहे हैं सर कि व्हाट इज वीएलपी, फुल फॉर्म ऑफ वीएलपी सर? यस सर, वीएलपी टेक्नोलॉजी का जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वीएलपी इज द वायरस लाइक पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने वायरस का मतलब स्ट्रक्चर तो रहता है सेम, पर उसमें वायरस जीनोम नहीं रहते हैं सर। तो हमने उसको वीएलपी टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया हुआ है, और उसमें वायरस जीनोम बिल्कुल नहीं रहेंगे सर। अनदर क्वेश्चन सर, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो एनिमल बाइट के केसेस आए हैं वो कौन से एनिमल के आए हुए हैं सर? डॉग के सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे चूहे वगैरह के काटने से भी मतलब वो रेबिस का वो रहता है सर? नहीं, चूहे से नहीं होता। चूहे से नहीं होता सर। और समटाइम्स सर जैसे काऊ वगैरह का रहता है कि काऊ वगैरह के काटने से भी? काऊ में जरूर हो सकता है। काऊ को अगर किसी डॉग ने काटा है, जी, इफ शी गॉट इन्फेक्टेड विद रेबीज disease, then her milk can cause, okay, or her bite can cause. It is yes an sir, indirect way, but directly it doesn't happen. राइट सर। सर यदि जैसे किसी काऊ के मतलब दूध पीने से अगर किसी काऊ को मतलब डॉग ने काटा है और उसको काऊ को दूध को किसी बच्चे ने पी लिया, किसी ने पी लिया, No, it doesn't secrete it. उसे कुछ इसका कुछ एविडेंस नहीं है सर। सर मेजर चैलेंजेस जनरली आते हैं कि जैसे 5 डोज और 3 डोज में बहुत सारे पेशेंट एक दो डोज लेने के बाद में डोज नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, actually dose schedule should be like that. As anyway, the schedule has to be completed because it has a long-term kind of protection, ना? जो लोग कुत्ता वगैरह पाले होते हैं उनके इस तरह की गवर्नमेंटली हुआ करती है। डॉग लवर्स हैं, जो लोग पेट रखते हैं डॉग, उसमें एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन तो उसमें मिल जाता है। और हाफवे में अगर अपन वैक्सीनेशन डिसकंटिन्यू तो नहीं मिलेगा। Anyway, in delayed cases also the course has to be completed. सर ये बच्चों के लिए सेफ वैक्सीन है सर अभी के उसमें सर? Presently there is a new study has been done by Cadila itself, where they have tried on more than 1 year of age children, more than 1 year, and it is found to be very effective in that also.
यस तो सर। इसी सर इसमें मैं ऐड ऑन एडल्ट वंस। जी जी सर, इसमें मैं 2 लाइन ऐड करना चाहूंगा कि सर 1 साल पहले जब हमने ये वैक्सीन जब लॉन्च किया था, तो हमको जो ट्रायल्स के बेसिस पे 18 इयर्स के प्लस के लिए हमको अप्रूवल मिला था। पर पेडियाट्रिक ट्रायल्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं सर। इसमें 384 सब्जेक्ट्स हेल्थी चिल्ड्रंस पे हमने ये ट्रायल्स हुआ है, हेल्थी वॉलंटियर्स पे। और ऑलमोस्ट मतलब वो उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है सर। तो मोर देन 1 ईयर पेशेंट्स को आप थेरेपीज इंजेक्शन प्रीफर कर सकते हैं सर। सर आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में सर जनरली क्या चैलेंजेस आते हैं सर कि मतलब थेरेपी एंटी रेबीज वाले जो पेशेंट आते हैं उनके लिए मेजर चैलेंजेस क्या रहते हैं सर, कि जैसे क्लिनिकल उसमें? मेजर चैलेंजेस में आजकल तो गवर्नमेंट में भी काफी कुछ सप्लाई हो रही गवर्नमेंट सेटअप्स में फ्री, तो इट्स अ वेरी हेल्पिंग हैंड टू द पेशेंट्स। उन लोग को बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। Certainly, this dose schedule, some of the patient they forget about the things. वो डेट्स को लेके पर्टिकुलर उस डेट को भूल जाते हैं, तो या तो वो 2-4 दिन लेट आते हैं, एक्सक्यूज मांगते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस। एंड सर्टेनली द नेक्स्ट कॉज इज द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन, दैट कम्स द सेकंड वन। एंड द थर्ड वन इज इग्नोरेंस। वो आज अभी भी जो है झाड़ा पूछा देसी दवाई, इस तरह की चीजें अभी भी गाँव में तो क्या शहरों में भी होती। ये 3 हर्डल्स हैं उसके पीछे। यस सर। बस सर यही क्वेश्चन अभी आए हुए थे सर। और सर मैं अपने पीएमटी से पारुल मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। पारुल मैम। Yes, sir. Yes, sir. I'm here. जी मैम। मैम जो क्वेश्चन आंसर मेरे पास में आए थे, मैंने सर डॉक्टर साहब ने उनका काफ़ी अच्छा आंसर दिया है। तो आगे मैम आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? First of all, thank you so much, Ajay sir, for being uh, for presenting the slides. And I would also like to thank all the eminent doctors who have also joined. Right now, it is almost more than 100 doctors who are there, who are listening to our conversation. And the questions which have shared are already being answered from Dr. Ajay Govardhan. Thank you so much, sir, for joining us, for being part of this webinar. I would like to inform you that Travis has won Economics Times Award with the Best Innovation of the Year. And we have also won Global Golden Tigers Award, Malaysia, for our Travis. These two things I would like to highlight. Also, we as a company, Kerala, we are working on Rabies Mukt Bharat. So this is the initiative from our end that we want to make India rabies free. We are running this webinar for almost 50 more webinars are live going on at the same time. So this is 50 different speakers. So we are also creating awareness regarding rabies as well as rabies. So thank you for being part of it, and thanks to all the participants who have joined for your valuable time. Thank you. थैंक यू पारुल मैम। एंड मैम आवर सेल्स मैनेजर्स में भी वो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण से उनका वो हो गया मैम डिस्चार्ज। जी मैम। मैम थैंक यू मैम। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर गोवर्धन for the Thank you. informative talk. And Yes, thank I you. also thankful to my all related to doctors जो मतलब इस वेबिनार को ज्वाइन करके इस वेबिनार को सक्सेस किए। उसके लिए आपने जो अपना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर मैम, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। Thank you, Thanks. sir. Thank Thank you, you, tech support. Log off. थैंक यू मैम, थैंक Tech support. यू मैम। ये एंड कर सकते हैं मैम? हाँ, append कर दो. Yes. ओके मैम, थैंक यू मैम। Tech support, please. Yes, ma'am. Turn off the lights. Yes, Session ma'am. is complete. Session is done. Okay, ma'am. Okay. ठीक है ना, सब लोग ज्वाइन किए ना? जी जी।
अच्छा अच्छा अब उसमें क्या है, जैसे तो आपने तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसमें हम लोग कर लीजिए जूम में, पहले जूम में करते थे, कभी हम लोग मेडिटेशन से क्या होता है, कभी मतलब स्कोर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इनके लिए अलग नहीं करने लगते हैं, तो वो यूट्यूब में चला जाता है। अच्छा जी जी हाँ। और ये पूरे जैसे लाइव कर, तो ये आगे मतलब वो सेटअप करता है, तो इसके अलावा भी हम लोग इम्प्रूवमेंट होते हैं, तो ये पूरे कंटिन्यू वगैरह। लेकिन ऐसे अच्छा अच्छा फीलिंग तो रहता है। और इसके साथ में हम लोग ट्राई करें, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं उनका एक ग्रुप रिलेटेड पूरा इंडिया अलग अलग फिर उसको नहीं अच्छा लगा, आपका फोकस्ड रहता है डेफिनेटली।